Hello, good morning student. Today we are going to start our new point of this lesson, that is a thermal energy based on the electric power station. Just okay, I have used here the one term based on the electric power station. Just okay. Why? Because I have say here the based on the electric power station, because turbines are the special designed theirs. Just okay, and these turbines we have drive its, and for their drive we have used the another energy resources. Okay, and which kind of the resources we have used, and according to that resources turbines are the designed specially constructed there. Yes, and belonging to that constructions of the turbines and usable energy resources for their drive to the turbines. Yes, we have categorized into different types of the thermal power, different type of the electric power station. Just okay, that is electric power stations are not so same, just these are going to have a different one there. That's a thermal power station, hydraulic power station, atomic power station, just like this, as well as the solar power station. So we all learn here wind power station, because in each and every categorize power stations, yes, we have get the different designed, structured, constructed turbines and energy resources also different there. And that's why we have used here the thermal energy based electric power station. Based electric power station. Actually, you know, see the particular points. So we have let us start here. So our point is a thermal energy based on electric power station. I have again repeated. So for its explanation, we have gets one slide here. So this is very simple slide I have tried to represent on a screen. So in this power station, in the thermal power station, we have used the thermal energy. And how we have obtained the thermal energy? Yes, that's by using the fossil, that is a coal. We have coal used there, that is one have a fossil here, and we have burns it, we have combustion it, and after the burning and the combustion, we get the heat here. Means that is the heat energy. We obtain the heat energy, and this obtained heat energy, yes, we have boiled the water, and when the water boil, we converts into the steam. It means the water convert into the steam, it creating the high pressure and high temperature, and due to that steams creating the high pressure steams. Yes, we have get it, I have tried to show. Yes, this is a, yes, that is one of blunts area I have shown here. This is a steam here. Yes, have a great energy there, have a great pressure there. Okay, and such steams again we have converted into what speciality of the water here, means the water again we have regain it. It is a show the physical property. Means the water show the special feature. It's obtained in a three states of matter, that is a solid, liquid, and gas. Yes, it's very important here. So it is a specific feature of a water, and that's why we have used in a low परसेंटेज ऑफ वाटर, कम पानी की तादाद में हमें इसको रिसाइक्लिंग प्रोसेस से उसको यूज कर सकते हैं, यानी कि कम मात्रा हो तो भी हम पानी का इस्तेमाल यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस में हो सकता है. इस वेरी वन इम्पोर्टेंट हियर, बट द वन ड्रॉबैक इज वन, दैट इज अ कोल हैव अ लिमिटेड स्टोर इन अ nature. Their storages are a limited one, and one day it's one have a totally goes to the lab or the destroyed here. Just कभी कभी न कभी कभी ये खत्म होने जा रहे हैं, तो ये इसका एक ड्रॉबैक दिखाई देता है, एक जिसे हमें झट से समझ में आता है एक्चुअली. So here is, I have shown one turbines here, and these special design constructed turbines having a special arranged blades towards its periphery. ठीक है, and such blades, yes, and across to that blade we have passed the steam, that is high pressure steam. When we pass it, that turbines goes to the drives. Yes, okay, and when we pass the steam we have used the nozzle. Yes, yesterday I have told to you, means the nozzle play the important role, they create the lot of pressure, and due to that creating pressure turbines goes to the rotates there. Just okay,
and turbines are connected to the generators. Yes, okay. And when the turbines rotate, that the magnetic flux goes to the change. Magnetic flux go to the change. Yes, okay. And due to that rotating turbines, yes, we have get the induced currents. Yes, according to which principle? हाँ चलिए बताइए. That is the electromagnetic induction. है ना. तो यही हमें यहाँ पे इंड्यूस करंट मिलेगा. एंड सच produced current, that is a generated current, yes, we have used for our different kind of the purposes. So I have tried to show that is a broadly concept of a thermal power station. समझ में आ रहा है बेटा. दिस इज अ थर्मल पावर स्टेशन और द पावर प्लांट. यस ओके. वी हैव यूज हियर अ स्टीम पावर. हमने यहाँ पे क्या यूज किया बेटा? स्टीम पावर. इसको हम स्टीम पावर प्लांट भी बोल सकते हैं. स्टीम पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट. So we have go to the our theory. So in the theory, yes, there are some flow charts are shown here. These are the flow charts, and with the help of that flow charts, yes, it's a try to become a or the try to uh, converts in easiness there. Just okay. How to understand it's easily there. That's one how sequentially flows are shown in this flow chart. So thermal energy. Yes, there is a special constructed turbines, and these special constructed turbines are drive or rotates by using the passing stem. Just okay. And how we will produce the stem here? How we will convert the stem here? Yes, we will convert the stem. Yes, boiling to the water, boiling to the water with the help of a boiler, with the help of the boiler, and using this boiler. Just yes, okay. We will use the one fossils there, that is a coal here, just for the obtaining the heat energy. Obtaining the heat energy, we have used one coal, that is a fossil, and we have burned it. And after the burning, yes, we have released the, yes, we have released the heat, and such a released heat, just that is a after the burning to that coal, yes, we have just boiled the water, and after the boiling to that water, we have convert the water into the stems, and such stems are very high temperature and pressure. Yes, and due to that, yes, we have drive that generators. Just okay. And it is a cause of to rotate the generator. It is a resource of energy. Yes, and belonging to that resource energy, turbines are the special construct there, special structurized there. ठीक है. And this energy in this time drive the turbine, thus the generator connect to the turbines. A generator किससे connect किए जाते हैं? Turbine से. And the turbines goes to the rotate, and electrical energy is produced. Turbines go to the rotate is nothing but that is a mechanical energy convert into electric energy, है ना. टर्बाइन जैसे रोटेट होते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगता है. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो जनरेटर में यहाँ पे क्या होता है? इंड्यूस करंट मिलता है ना बेटा. इंड्यूस करंट फिर जो मिलेगा वो हम क्या करते हैं, जैसे उसे हमें ऐसे अलग अलग पर्पज के लिए हम उसको यूज करते हैं. जैसे ओके. सो द स्टेम इज कन्वर्टेड बैक इनटू द वाटर. अब ये जो स्टेम होगी तो मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि वाटर क्या कर किया जा सकता है रिसाइक्लिंग प्रोसेस से, वी हैव अगेन रिगेन इट. बट चारकोल वी कांट गेट रिगेन इट. कोल हमें रिगेन नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ केमिकल प्रोसेस. व्हेन यू बर्न द चारकोल वी गेट द केमिकल. That is when have a chemical energy. Chemical energy. After the burning coal, we have get the ash, not again regain the charcoal there or the coal there. But when we have use the boil, we have boil the water. We have boiled the water again. We have regain its stem, convert into water. Just okay means we have obtained it just as it is. Just okay we have used again it. That is a recycling one there. So when combustion of the coal, that is a chemical energy. ठीक है. And after that's chemical energy we have obtained which kind of energy? That is a thermal energy. चलिए तो देखिए बेटा यहाँ पे फ्लो चार्ट बताया. that is a fuel coal. Yes, we have burns into the, that is a after their burnings in that boiler consisting water. Yes, it's become a heat here. Just okay, they absorb the heat energy.
Yes, okay, and such heat energy absorbing is converted into vapors or the steams. Yes, again due to that stems, yes, okay, we have passed through the nozzle across that blade of the turbines go to the rotate due to the stem. Yes, okay, that is a steam turbine. Again, when the turbines rotate, generators become functionals. Yes, okay, that is a mechanical energy converted into electric energy. We have obtained the electric energy here. Yes, okay, and such water we have use and again we have reuse there by the condensation method. By the condensation method. ठीक है, means that is a system for the converting steam back to water. Converting steam back to water, that is a recycling one there. ठीक है, it's very important here. So this flow chart we have remember it. जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है flow chart showing the generation of the electric energy using the thermal energy. इसे हमें यहाँ पे पूछा जा सकता है. चलिए बेटा अगेन वी हैव गो टू द नेक्स्ट. अभी देखिए थर्मल एनर्जी इज यूज्ड इन अ जनरेटर्स जस्ट ओके फॉर द obtaining electric energy and such power plants are called as a thermal power plant or the thermal power station. ठीक है, and the chemical energy in the coal is converted into electrical energy through the several steps. Just okay, which are the several steps? That is a chemical energy in coal. कोल में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी. अगेन आफ्टर द बर्निंग ऑफ दैट कोल दिस will get the thermal energy. Yes, okay. Again thermal energy is converted into yes kinetic एनर्जी इन स्टेम. क्योंकि स्टेम क्या करता है? फ्लो बनाता है, ड्राइव करता है. दैट्स अ काइनेटिक एनर्जी. एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ टर्बाइंस, इट क्रिएट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टर्बाइंस. दिस ओके मीन्स द मैकेनिकल एनर्जी, है ना. टर्बाइंस घूमने लगते हैं, है ना, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी बनती है ना. तो यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी ये हमें बनाने के लिए, टर्बाइंस को घुमाने के लिए यहाँ पे थर्मल एनर्जी से जो स्टेम मिलती है वही हम यहाँ पे यूज करते हैं. ठीक है बेटा. एंड वी हैव ऑब्टेन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर, वी हैव आल्सो रिमेंबर इट्स. इट्स ओके, दैट इज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन द थर्मल पावर स्टेशन. ठीक है, तो ये प्रोसेस हमें यहाँ पे मिलती है. एक्चुअली वी हैव गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज हाउ द plants. Yes, okay, implementations and how they construct there, how they structure that plants, how the thermal energy we have obtained here. Yes, it's shown by the designs or the one constructed forms here. So there are two towers here. Yes, one is on have a stack, another is a vapor and hot air cooling water, that is a condensation tower. ठीक है, and boiler tower, these are two tower and this is a generator section. ठीक है, and this is a turbines here. Again these situations yes I have shown here, but for their more getting clearing it, for their more clarifying it, I have tried to show one animation effect here. So come to that animation effect. So this is one have a boiler here. Yes, so it's very important here, boiler. So in that boiler we have continuously bombarding the storm of fire. Yes, okay, and this is one have a one. Yes, that is a container, that's a हम इसको क्या बोलते हैं? भट्टी, फर्नांस. and in that furnace, that's a boiler. Yes, okay, actually यहाँ पे वाटर बॉईल किया जाता है, बट water we have not connect approach to that fire, just it's we have used here in that boiler. Yes, that is a metallic pipes, and through that metallic pipes there are a continuous flow of water. देखिए continuous flow of water ये दिखाई दे रहा है ना बेटा, ब्लू कलर का continuous flow of water. And such a continuous flow of water we have passed through that boiler, and in the boiler we have regularly passed the flow. Yes, okay, bombarding streams flow there. Yes, okay, and due to that it's create the which kind of energy? That is heat energy. And such heat energy, yes, we have apply here. That time water converts into the
vapor, that is a steam here. And such steams, because we have used here the high temperature, yes, okay, and due to that creating the, that is a small designed pipe, yes, they create the, yes, more pressure also, means the, in high pressure and high temperature, yes, okay, steam passes. And such passing steams, yes, we have directly, yes, flow on the turbines, pass on a turbines. And when you pass on the turbines goes to the rotate, and due to that rotating turbine magnetic flux go to the change. Turbines are connect to the generator, एक क्या है बेटा यहाँ पे generator, turbines are connect to the generators, and generators just they produce the induced current here, induced current, just okay, according to the, yes, EMI principle. And such induced current we have obtained here, and such induced current we have take out for our different kind of the purposes by using the different three wires. Yes, which are these? Yes, this wire we have already known, we have already learned in a ninth class, that is a one is a phase, another is a neutral, and next one is a earthing, three phases है ना। यहाँ पे तीन तारा होते हैं ना, बोलते हैं जैसे कि फेज है, न्यूट्रल है और अर्थ है ना। एमएससी भी हमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रोवाइड करती है ना, महाराष्ट्र विद्युत महामंडल बोलते हैं हम इसको। तो तीन तार होते हैं, है ना बेटा। तो वो जैसे इससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, और ये जो सप्लाई हमें दिखाई दे रहा है, एंड दिस सप्लाई, यस, वी हैव occupied and we have completed our necessities or the our different needs, yes, which are the depends totally on electricity, just okay. It's a very easy फॉर अंडरस्टैंडिंग, जैसे ओके। देखिए अंडरस्टैंड होने के लिए बहुत सारा इजी है, यहाँ पे ये स्टेम्स है, कूलिंग है, यहाँ पे कूलिंग भी हो रहा है, स्टेम भी, जैसे कि ये ऊपर देखिए कूलिंग सेशन है, यहाँ पे बॉयलर है, बॉयलर, कूलिंग सेशन, टर्बाइन्स एंड जनरेटर्स, यस ओके। सो we have learns here, this is a simple animation effects, just okay। again we have go to our दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। चलिए, तो यही डायग्राम में देखिए बेटा वही, लेकिन हमें एनिमेशन के इफेक्ट के द्वारा देखा है। तो यहाँ पे देखिए फ्यूल एयर है, यहाँ पे पाइप्स आर आरएचडी हियर, ठीक है, एंड थ्रू दैट पाइप रेगुलरली पास द वाटर हियर, ठीक है, यस। एंड ड्यू टू द पासिंग हाई टेम्परेचर flow storm of the fire, yes, it's a become boil, yes, and increase the temperature, that is a high temperature, and create the high pressure, yes, generator goes to the rotate here. Again these used water steam, again we have cooled it, that is a cooling pump station, just okay. And we have supply to that cooler tower, yes, after their condensation process carried here, and through that condensation process again we have regained the water, and such obtained water again we have supply pass through the towards the बॉयलर, एक कहाँ पे पास करेंगे हम, बॉयलर की तरफ। चलिए, तो वी हैव कंप्लीटेड इट। अगेन वी हैव आस्क्ड सम क्वेश्चन हियर। चलिए बेटा, व्हाई द एनर्जी इन द कोल इज कॉल्ड एज अ केमिकल एनर्जी? बिकॉज द व्हेन यू बर्न द कोल we do not regain it, it is one of chemical change, that is a complete change, we do not obtain in their fundamental properties, just okay. Because when we have burned the coal, yes, we have obtained the heat, yes, and ash, just okay, means ash we have not regain, we have not reused there, just okay। चलिए, तो when combustion is a chemical process, combustion is a chemical process, समझ में आता है, that is a chemical energy, ठीक है। after the combustion we have get the which energy, that is a heat energy, heat energy। चलिए, सो वाई स्टेम इज यूज्ड, रोटेट द टर्बाइंस, स्टीम ही क्यों यूज किए, दूसरा क्यों, दूसरा हम एनर्जी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टीम ही क्यों यूज किया है? बिकॉज yes, in a few quantity of water, few availability of water, yes, it's a possible here, because water we have used recycling process, just okay। are you clear here? so यहाँ पे steam use कर सकते हैं, and when we have vapors forms of the steams, just okay, that steam is in form of vapor, yes, have a great pressure, yes okay, have great energy there, lot of energy, great pressure, yes okay, and we have used such energy for rotating the turbines here, and we have regained it. But here is one drawback, that is a coal is a
Yes, carry the chemical process. And the fossils, they have limited areas in nature. Yes, okay, their storages. Yes, okay, their availability in nature is a have limitations. ठीक है, and after their completion means one day it's a surely they may be the total lack और कम होते जाएंगे, है ना, नहीं नहीं हो कभी तो वो खत्म हो जाएंगे। और जैसे कि खत्म हो जाएंगे तो थर्मल पावर स्टेशन will not we have applied applicables here, ठीक है, बिकॉज दैट्स अ रिसोर्सेज फंडामेंटल रिसोर्स वी कांट यूज हियर। स्टेम तो मिलेगा वाटर, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे कोल मिल सकता है नहीं, बिकॉज दे हैव ए लिमिटेशन। इसको हम आगे थोड़ा सा देखेंगे थ्योरी में। चलिए बेटा, तो यहाँ पे हम इसको लर्न करो सही ढंग से। डायग्राम को थोड़ा सा एक छोटा सा कागज पेन लेके उसको ट्राई करो, उसको समझ लीजिए, थ्योरी पढ़ो और डायग्राम को थोड़ा सा मगअप करना है, उसको लर्न करना है। ठीक है बेटा, नीचे वाली भी डायग्राम यहाँ पे वही रिप्रेजेंट करती है। समझ में आ रहा है? ये टावर है, यहाँ पे एक पाइप्स आर अरेंज्ड हियर into the boiler, regularly water flow passing, it's okay, due to the boiling, it's okay, burning the coal, heat energy is a you hold there, and due to that heat energy water goes to the heat here, just okay, that is a evaporate here, convert into steam, लाइक दिस। अब ये प्रोसेस यहाँ पे बताई गई है। ठीक है बेटा, चलिए हम आगे स्लाइड देखेंगे। ठीक है, इन द अनदर स्लाइड दैट इज अ थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन। चलिए बेटा, थर्मल पावर स्टेशन एक्चुअली कैसे काम करते हैं हमने देखे। तो थर्मल पावर स्टेशन जस्ट वी हैव ऑब्जर्व, yes there are two type of tower, yes which are the tower, एग्जाम में पूछा जाता है, there are two towers, schematic one there, yes okay, and such a towers, one is a, yes that is a boiler, and another is one have a, that is a coolant कंडेंसेशन सेक्शन, कंडेंसेशन टावर देयर। ठीक है बेटा, तो स्कीमेटिक अरेंजमेंट दिखाई देती है। चलिए, तो यहाँ पे कंपेरिजन जैसे हम करेंगे इसको, तो यहाँ पे एक पावर स्टेशन जब दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि हमने जो पहले मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताया, तो वहाँ पे ब्लॉक डायग्राम के द्वारा वहाँ पे बताने का प्रयास किया, एंड वी हैव अंडरस्टैंड देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स। देखिए विच कंपोनेंट्स, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, विच कंपोनेंट्स इन द थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, और स्टेम पावर स्टेशन, विच कंपोनेंट, द फर्स्ट कंपोनेंट नेसेसरी इज, यस बताइए बेटा, कौन बता सकता है? हाँ चलिए, पहला होता है यहाँ पे दैट्स वन बॉयलर, बॉयलर इज इंपॉर्टेंट है। फिर टर्बाइंस है, ठीक है, इसके बाद जनरेटर्स है, फिर कंडेंसर टैंक है, और द कंडेंसर टावर है। yes okay, they are arranged into the power station, one systematic arrangements are shown into that block diagram, and this diagram is shown and how the working or how the mechanism of the thermal power station just they done there, we have learns here. Actually, after the combustions of the fuel, the boiler yes emit gases, and such emitted gases, released gases yes into the atmosphere are very, yes they are very high tower, वो जो टावर होता है थोड़ा सा ऊंचाई पे होता है। वंस द टावर इज अ रोटेट, सॉरी वंस द टर्बाइन इज अ रोटेट, जैसे टर्बाइंस वो रोटेट करेगा, यहाँ पे टर्बाइंस टावर आ गया है गलती से। व्हेन द टर्बाइंस इज अ रोटेट यूजिंग द स्टेम high temperature and high pressure, yes stem temperature, yes pressure decreases, this stem is converted back into the water, because the water show the physical property, or water have a special feature that it show the three states of a matter, that is a solid, liquid and gas. Yes we have remember, it's okay. Again, water take out, yes heat, yes okay, and it's convert into steam, and this is done in the condenser, means again the water stem convert into, sorry water stem convert into water। ठीक है, वाटर स्टेम क्या होगी बेटा, यहाँ पे वाटर में कन्वर्ट होगी, क्योंकि कंडेंसर जो होते हैं ना, कंडेंसर यानी कि संघनन टाकी बोलेंगे हम इसको, वहां पे कंडेंसेशन होता है वहां पे। ठीक है, हीट एनर्जी इन द स्टेम इज गिवन टू द वाटर एंड स्टेम कंडेंस बैक टू द वाटर, and the heat absorbed by the water is then released to the atmosphere through the vapor and the heated air through the cooling tower,
although the thermal power generation is a major way to इलेक्ट्रिसिटी, एक मेजर वे है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है बेटा, जनरेशन के लिए। एंड देखिए बेटा, तो यहाँ पे हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी क्रिएट होते हुए दिखाई देता है आने वाले फ्यूचर में, दैट इज अ लिमिटेशन ऑफ द कोल, लिमिटेशन स्टोरेज ऑफ द कोल, ठीक है, एक यहाँ पे ड्रॉबैक्स दिखाई देता है। चलिए बेटा, यहाँ पे हमें एक प्रोजेक्ट दिया है, पिछले साल के जो बच्चे थे, तुम्हारे जो सीनियर्स थे, एल्डर्स, यस, अभी पास आउट हो चुके हो, उन्होंने एक इसी के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट किए थे, थर्मल पावर स्टेशन बनाए थे, ठीक है बेटा, उसके मॉडल हम अपने पास है, वो तुम्हें देखे भी है शायद। तो देखिए, वैसे मॉडल हमें यहाँ पे बनाना है, ठीक है, बल्कि ये मॉडल बनाते समय आईसीटी की हेल्प लेनी है। तो यहाँ पे कुछ स्लाइड बनाने हैं पावर पॉइंट को लेकर, ठीक है बेटा, कुछ यहाँ पे कलेक्शंस बनाना है, पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं अपने नोटबुक में, उसको चिपका कर उसका एक कलेक्शन, एक एल्बम बना सकते हैं, ठीक है बेटा। एज वेल एज वी हैव कलेक्ट द सम एनिमेशंस वीडियो, यस, एज वेल एज द सम वीडियो क्लिप्स आल्सो, यस, एंड वी हैव सेंड टू आवर योर फ्रेंड्स, है ना, अपने फ्रेंड्स को हम सेंड भी कर सकते हैं। वी हैव कलेक्ट्स द डाटा, एक्चुअली दिस इज वन प्रोजेक्ट फॉर यू, रिमेंबर इट्स दिस इज अ प्रोजेक्ट फॉर यू, ठीक है, हमें प्रोजेक्ट फॉलो करना है। देखिए, ये चैप्टर में हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट फॉलो करने हैं, ठीक है। चलिए बेटा, अगेन वी हैव गो टू द अवर नेक्स्ट स्लाइड, यस, ओके, दैट्स वन सिंपल स्लाइड, दिस इज अ इंफॉर्मेटिव स्लाइड। चलिए, अभी ये जो स्लाइड में यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, दिस इज वन हैव इंफॉर्मेशन, यस, इन आवर इंडिया there are a different thermal power station, yes, they are shown in this map, given map. Yes, these are a different thermal power station, but out of them, this thermal power station we have learns, yes, in our study curriculum, that's for our 10th standard के लिए, है ना, अपने लिए यहाँ पे कुछ मेजर थर्मल पावर स्टेशन दिए वाले हैं, जस्ट ओके, विच आर द मेजर थर्मल पावर स्टेशन from India? Yes, there are some places with their states and their capacity, how many electricity generated there. Capacity is represented here in a megawatt. Vindhyanagar, yes, from Madhya Pradesh. Yes, they are generating electricity generating capacity is near about 4760 megawatt. Remember, it's Mundra. यहाँ पे दो मुंद्रा है from Gujarat state. Just their electricity generating capacity of that thermal power station is near about 4620 and 4000 megawatt, just okay, with respectively. Another, that is a Tamnar, yes, from a Chhattisgarh, yes, their limitation of electric generating capacity is a 3400 megawatt, yes, and which is nearer to you, or which is known to you, is from Maharashtra, that is a Chandrapur. Limitations of the electricity generating capacity there of that power station, thermal power station, is near about 3340. Remember, it's because it is related to our state, okay. So it's one important here, we are always remember, yes, for our IQ study के लिए, है ना, क्योंकि these are the one have competitive एज, है ना, स्पर्धा का युग बोलते हैं इसको, है ना, जैसे अभी छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें यहाँ पे आते हैं हर एक एग्जाम में, तो इसे यहाँ पे याद रखने के लिए महत्वपूर्ण है, और ये मैप थोड़ा सा रीड कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सो अगेन वी हैव गो टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस thermal power station, that is a limitation, that is a problem. How about some drawbacks here? Which are the drawbacks here? देखिए बेटा, तो यहाँ पे तो ड्रॉबैक्स तो हमने जैसे कि हम डायग्राम जब से लर्न करते हैं तो हमें ड्रॉबैक्स भी दिखाई देते हैं। जैसे देखिए, टॉप ए बॉयलर है, बॉयलर में यहाँ पे कोल बर्न किया जाता है, हीट एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी यहाँ पे एक टैंक में सप्लाई की जाती है, कंडेंसेशन, जैसे अभी यहाँ पे ये क्या होता है, वेपर कन्वर्ट होता है, वेपर फिर यहाँ पे क्या होगा, टर्बाइंस को घुमाएगा, यस, यहाँ पे जनरेटर कनेक्ट किया वाला है, जनरेटर EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस करेगा, है ना बेटा, वो प्रिंसिपल को लेकर इंड्यूस करंट ये पास थ्रू द our different kind of purposes, various industries, domestic purposes, yes, okay, as well as the small business, yes, as well as the
multiple tasks, yes, we have used in our daily life, and for their multiple tasks we have used the electricity there. Yes, is one energy, so we have used for different purposes such like that. This is a mechanism. This is one have a block diagram of the thermal power station, that is a steam power station. ठीक है, but there are some problems. Yes, which problems? That is one, air pollution due to the burning of that coal. There is a unwanted unnecessary gases. Yes, which are they? They are the emission gases. One is a carbon dioxide. Yes, it is a cause of thermal, दैट इज अ थर्मल कॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, है ना। आज के जो टेम्परेचर वृद्धि हो रहे हैं तो यही इसका कॉज कौन है बेटा, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एज वेल एज द सल्फर डाइऑक्साइड, एस इट इज कॉज एसिड रेनफॉल के लिए, जैसे नाइट्रोजन इज ऑल्सो एसिड रेनफॉल के लिए हमें कॉज बन सकता है। यस, एंड इट इज हार्मफुल टू अवर हेल्थ। ठीक है, along the emissions of the gases due to the burning to the coal shoot यानी कि जैसे दगड़ी दगड़ी कोळसा बोलते हैं हम उसको, शूट यानी कि ऐसे ब्लॉक्स होते हैं उसके, एंड सच पार्टिकल्स वी हैव रिलीज्ड द यस एनवायरमेंट। yes, this is a cause of serious health problem which is related to our respiratory tract और the bronchi। अपने जो bronchi होता है, respiratory tract होता है, इसके लिए वो क्या होता है, हानिकारक होता है ना बेटा। तो it is a serious yes cause to the human being। yes okay, जैसे माइनिंग होता है ना, कोल माइनिंग, तो वहां पे देखिए बेटा बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स होता है। yes okay, and it is not good for our respiratory tract। ठीक है, and the reserve of fuel used in this method, that is the coal are limited। ये कोल कैसा है, लिमिटेड है ना बेटा, कभी ना कभी ये खत्म हो सकता है, होने जाएगा हो जाएगा ये। yes, and therefore yes there will be the limitations yes on the availability of that coal, and it is yes not a for a long time। जैसो कि ये लॉन्ग टाइम के लिए पॉसिबल नहीं है ना, कभी ना कभी थर्मल पावर स्टेशन हमें यहाँ पे बंद करने पड़ेंगे। क्यों? ड्यू टू दिस मेजर कॉज। ठीक है बेटा, बिकॉज देयर इज अ लिमिटेशंस एज वेल एज द वन पोल्यूशन इज अनदर फैक्टर, है ना। अभी पोल्यूशन हुआ तो हुआ, लेकिन एनर्जी महत्वपूर्ण है ना, दैट इज अ टूडेज पीरियड, टूडेज रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो वी हैव गो नेक्स्ट पॉइंट इन नेक्स्ट पीरियड। ठीक है बेटा, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ इस कल जाएंगे। ठीक है बेटा, अनदर पावर स्टेशन हम देखते हैं। सो इफ यू हैव एनी डाउट देन मी आस्क मी। So we'll stop here. Thank you.